ओके, ला स्टार्ट करम आम्ही आपनो थर्ड लेक्चर एनिमल टिश्यू को। थर्ड हो कि फोर्थ हो? थर्ड लेक्चर हो। यस यस, थर्ड लेक्चर कसको एनिमल टिश्यू को थर्ड लेक्चर आम्ही स्टार्ट करछम। एसमा आम्ही कवर करछम कंपाउंड इपिथेलियम को डिटेल। ओके, एरा कंपाउंड इपिथेलियम, जो कंपाउंड इपिथेलियम दो टाइप्स को छा, ठीक मैले भने थे कुन कुन। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल, कुन ट्रांजिशनल, ठीक है। इसलिए हामीले अर्को नामलाई के भन्छौँ? अर्को नामबाट युरोथेलियम, कुन युरोथेलियम। अनि अर्को हामीसँग के छ? अर्को हामीसँग स्ट्रेटिफाइड, अर्को हामीसँग के छ? स्ट्रेटिफाइड, बुझ्यौ? हेर कंपाउंड इपिथेलियम दो टाइप्स को छ। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल एंड सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड। ओके, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड। हाँ, ठीक छ। हेरा अब यो जुन स्ट्रेटिफाइड छ नि, यो फर्दर डिवाइडेड इन्टु टू पार्ट्स। स्ट्रेटिफाइड इज फर्दर डिवाइडेड इन्टु टू पार्ट्स। दिस इज डिवाइडेड इन्टु टू पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट इज पहिला के छ? पहिला हामीसँग के छ? फर्स्ट इज क्रेटिनाइज्ड, क्रेटिनाइज्ड। फर्स्ट इज क्रेटिनाइज्ड, कुन क्रेटिनाइज्ड है। एंड सेकंड इज नॉन क्रेटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। फर्स्ट हमीसँग के छ? क्रेटिनाइज्ड एंड सेकंड इज नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक छ। सेकंड के छ हमीसँग? नॉन क्रेटिनाइज्ड। ओके, हो ला ठीक छ। हेरा क्रेटिनाइज भनेको, क्रेटिनाइज कहाँ कहाँ पाइन्छ? एग्जाम्पल हेरा, एग्जाम्पल क्रेटिनाइज को एग्जाम्पल के हो र नॉन क्रेटिनाइज को एग्जाम्पल के हो? क्रेटिनाइज र नॉन क्रेटिनाइज। यसलाई रिमेम्बर गर्न, हामीलाई याद गर्ने तरिका याद गर्नुपर्छ। एट द रेट के हुन्छ? ट्रिक निमोनिक्स के हो? वोट। ओके, के हो? वोट। सॉरी 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 सॉरी, वोट होइन। यसलाई याद गर्ने तरिका, यसलाई याद गर्ने तरिका दुईटा छ। हेर, नन क्रेटिनाइजको लागि र क्रेटिनाइजको लागि अलग। यसलाई हामीले नहास भनेर याद गर्छौँ, नहास, ठीक। अनि नन क्रेटिनाइज भनेको बोका। यो याद गर्ने तरिका हो बोका, एट द रेट बोका याद गर्ने, ठीक। नहास, ठीक छ। यो नहासको यनबाट के हुन्छ? यनबाट नेल है, यनबाट के हुन्छ? नेल, यनबाट नेल। एचएबाट हेयर। ओके, नहासको यनेबाट नेल, एचएबाट हेयर र यसबाट हामीसँग के छ? स्किन। यसबाट हामीलाई के बुझ्नुपर्छ? स्किन। ओके, अब यो बोका भनेको के हो? ठीक छ। बोकाको बीबाट के हुन्छ? बक्कल क्याभिटी, बक्कल क्याभिटी। बक्कल क्याभिटीमा के पढिहाल्छ? फेरिन्ज पढिहाल्छ, ठीक छ। यसपछि ओबाट, ओबाट के छ हामीसँग? ओबाट ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। यो जुन हामी खाना जब निल्छौँ नि, तब यो जुन पाइप हुन्छ नि स्टोमच र फेरिन्जमा जोड्ने पाइप न, यसले भन्छौँ ओइसोफेगस, ठीक छ। यसको सेन्टिमिटर कति हुन्छ? 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ, याद राख्नु है, ओइसोफेगस। यसपछि हामीसँग छ सीबाट कोर्निया, अनि अर्को सीबाट कन्जक्टिभा, बुझ्यौ? बोकाको बीबाट बक्कल क्याभिटी, ओबाट ओसोफेगस, सीबाट कोर्निया र कन्जक्टिभा र एबाट एनाल
ANAL एनाल कैनल, ठीक है, एनाल कैनल, इसलिए मिले के बन जा बर्थ कैनल, बर्थ कैनल, जस्ट लाइक सिंपली वेजाइना, बुझो। तो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियम कति टाइप्स को छा, दुईटा, कोन कोन टाइप्स को छा, स्ट्रेटिफाइड आणि ट्रांजिशनल, कोन कोन स्ट्रेटिफाइड रा ट्रांजिशनल, ठीक। अब यो स्ट्रेटिफाइड कति पार्ट्स में डिवाइडेड छा, टू पार्ट्स, कति पार्ट्स, टू पार्ट्स, कोन कोन, कोन कोन बना, कोन कोन, क्रेटिनाइज रा नॉन क्रेटिनाइज, क्रेटिनाइज लाई रिमेंबर करने तरीका के हो, क्रेटिनाइज लाई रिमेंबर करने तरीका के हो, नाहास, नाहास को एन बटा नेल, एच बटा हेयर, एस बटा स्किन। अब हेरा यो नेल हेयर र स्किन के में काम करछा, यो प्रोटेक्शन में काम करछा नी, तो स्ट्रेटिफाइड को फंक्शन के हो इन हेयर को प्रोटेक्शन, मैले अस्ति ना बने थे कंपाउंड इपिथेलियम को हेर जस्तो यो बेसमेंट मेम्ब्रेन भयालो, या मेम्ब्रेन छा मल्टीपल लेयर हुंचा नी, मल्टीपल लेयर के को लागी हुंचा प्रोटेक्शन को लागी, ते कारण ले स्ट्रेटिफाइड को फंक्शन के हो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को कति वटा दुई वटा टाइप्स स्ट्रेटिफाइड को, क्रेटिनाइज रा नॉन क्रेटिनाइज, क्रेटिनाइज बने को नाहास र नॉन क्रेटिनाइज बने को बोका, नाहास बने, नाहास को एन ए बटा नेल, एच ए बटा हेयर र एस बटा स्किन, बोका को बी बटा बकल कैविटी दैट इज फेरेंस, सी बटा कोर सॉरी बी ओ बटा ओसोफेगस र सी बटा कॉर्निया र कंजुक्टिवा र ए बटा एनाल कैनल जसले मिले बर्थ कैनल पनेरा भनिन्छ भेजाइना हो, बुझ्यौ ला ठीक छ। अब यसपछि हामीसँग ट्रान्सिशनल इपिथेलियम छ, यसले हामीले यूरोथेलियम पनि भन्छौँ, यसले के गर्छ, यसको फंक्शन के हो अलोज स्ट्रेचिङ, अलोज स्ट्रेचिङ, ठीक छ, अलोज स्ट्रेचिङ, यो कसले बनेको हुन्छ, मेड फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ओके, मेड फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, याद रखने मेड फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, के बटा बने कौन सा, मेड फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ओके, के बटा मेड फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ओके। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुन्छ नि, यो संगा व्हेन इट्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्ट, यो संगा कतिवटा लेयर हुन्छ, यो संगा कतिवटा लेयर हुन्छ, जब यो कॉन्ट्रैक्ट हुन्छ नि तब यो संगा 4 देखि 5 लेयर हुन्छ, ओके। अनि यो जब स्ट्रेच हुन्छ नि, स्ट्रेच हुन्छ नि, स्ट्रेच्ड, तब यो संगा 2 देखि 3 लेयर हुन्छ, ओके, 2 देखि 3 लेयर हुन्छ, बुझ्यौ, 2 देखि कतिवटा लेयर हुन्छ, 3 लेयर हुन्छ, ओके। अब यसमा याद राख्ने एउटा कुराहरू छ, जस्तै मैले भने थे कि इपिथेलियल टिस्यूमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यसको एउटा ट्रान्सिशनल यूरोथेलियम छ जसमा नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन के हुन्छ प्रेजेंट हुँदैन, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक छ। अब यसलाई याद गर्ने तरिका, ओके, याद गर्ने तरिका हेर, यसको इक्जाम्पल हामीलाई 7 अप भन्ने थाहा छ, पहिला पहिला एउटा कोल्ड ड्रिंक आउँथ्यो 7 अप भन्न, तर त्यो 3 साल पहिला के भयो, बन्द भइहाल्यो, 3 साल पहिला अप 3 अप 3 के यूपी, यो याद करने तरीका हो मात्र, ओके। हेरा फर्स्ट यू बटा यूरेथ्रा, सेकंड यू बटा, फर्स्ट यू बटा यूरेथ्रा, सेकंड यू बटा यूरेटर, आणि थर्ड यू बटा यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लैडर रप्पी बटा पेल्विस, पी बटा पेल्विस, पी बटा केवंचा बना पी बटा पेल्विस. ओके हेरा पी बटा पेल्विस. हेरा ट्रांजिशनल इपिथेलियम लिखे गरजे ऑलोज स्ट्रेचिंग मेड फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार इपिथेलियम कंट्रॅक्ट जेव्हा उंचा तेव्हा युसंगा 4 देखी 5 लेयर उंचा आणि स्ट्रेट सुंदा केरी 2 देखी 3 लेयर बचा. इसमें क्या होता है ना नो बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखना नो बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसको एग्जांपल के हो 3 अप 3 यू पी एउटा यू अर्को यू रा अर्को यू यूरेथ्रा यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर रा पी बटा के ऊंचा पेल्विस पी बटा के ऊंचा पेल्विस. ठीक अब इसको संगई संगई इसलिए संगई संगई याद करने तरीका नोट में लिखी हाला. नोट में हमी संग 3 टाइप्स को ग्लैंड छा. एक छा एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड कौन ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड. और को हमी संग के छा होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड. आणि नेक्स्ट हमी संग लास्ट छा मेरोक्राइन ग्लैंड, मेरोक्राइन ग्लैंड. फर्स्ट इज एपोक्राइन ग्लैंड, second is holocrine gland and third is apocrine gland. थर्ड इज एपोक्राइन ग्लैंड. एपोक्राइन ग्लैंड बने को टिप बटा सिक्रेट होनो कहाँ बटा टिप बटा सिक्रेट हुंचा हुंचा एपेक्स बटा है. ओके तहेरा जो मेमरी ग्लैंड को टिप बटा के सिक्रेट हुंचा टिप बटा के सिक्रेट हुंचा मिल्क. तो यहाँ इसको एग्जांपल के हो मेमरी ग्लैंड. इसको एग्जांपल के हो मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड. ओके आणि मेमरी ग्लैंड लाई हमी ले के बनचे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. कौन ग्लैंड मेमरी ग्लैंड इज called modified sweat gland. This is the most important question asked in okay modified sweat gland, modified sweat gland. ठीक છે modified sweat gland. इस પછી अर्को हमी संगा छा होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड जिसमें जो ग्लैंड है नी तो पूरा ही सिक्रेट होता होल सेल डिसइंटीग्रेट रिलीज. ओके होल सेल डिसइंटीग्रेट हुन्छ आणि त्यसपछि के हुन्छ रिलीज हुन्छ. ओके इसको एग्जांपल के हो सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड. तो एग्जांपल के हो सेबेशियस ग्लैंड. इसको एग्जांपल के हो सेबेशियस ग्लैंड. ओके इसको एग्जांपल के हो सेबेशियस ग्लैंड. इस પછી આરકો હમી સંગા છે મેરોક્રાઇન, મેરોક્રાઇન ગ્લેન્ડ हेरा डिसइंटीग्रेट डिस्चार्ज फ्रॉम पार्ट. कौन पार्ट बच्चे को कई पार्ट बिच्चा को कई पार्ट बिच्चा को कई पार्ट बटा के उनो सिक्रेट होनो. ओके डिस्चार्ज होनो. बिच्चा को कई पार्ट बटा के उनो सिक्रेट होनो. ओके उनछा हेरा इसको एग्जांपल के छा एग्जांपल के छा सेलिब्री ग्लैंड, सेलिवेरी ग्लैंड. ओके इसको एग्जांपल के हो सेलिब्री ग्लैंड. और को एग्जांपल के हो इसको पेंक्रियाज, पेंक्रियाज.
ठीक। और कोई एग्जाम्पल क्या हो उसको, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। और कोई एग्जाम्पल क्या हो, म्यूकस ग्लैंड आणि स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड रा स्वेट ग्लैंड। ओके, म्यूकस ग्लैंड रा स्वेट ग्लैंड। ठीक छ, यो भयो, बुझ्यौ, यो भयो। अब म एउटा हेरा यहाँ एउटा क्वेसन राख्दैछु। ठीक छ, यहाँ एउटा के राख्दैछु, क्वेसन। त्यो क्वेसन हेरा, क्रिप्ट्स of, okay, crypts of Luber, crypts of Luberkuhn is, crypts of Luberkuhn is ऑप्शन नंबर ए માં, ऑप्शन नंबर ए માં, ऑप्शन नंबर ए માં सिंपल ट्यूबलर, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए માં सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी માં सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी માં, ऑप्शन नंबर ए માં सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी માં सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी માં सिंपल सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड, एल्वियोलर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी માં, ऑप्शन नंबर डी માં कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। ला आबा इसको आंसर बना मले, वीडियो पुश करी आला आणि एक छीन ट्राय करा। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर लाई रिवाइज करा, जिसमें मैले पढ़ाएको थिएँ यो सबै एकचोटि रिवाइज करा। सेकंड लेक्चर को लास्ट पार्ट मैले पढ़ाएको थिएँ, यही सबै पढ़ाएको थिएँ, एकचोटि रिवाइज करा था। भिडियो पुश गरेर रिवाइज गरिहाल अनि त्यसपछि यदि एन्सर आफ्नो टिक लगाउनु छ भने टिक लगाइहाल अनि त्यसपछि हेरा रङ छ कि राइट छ। ठीक, ल पुश गरेर ट्राई करा। ल हेरा यसको आन्सर हेरा, क्रिप्ट्स अफ ल्युबरक्विन मैले पढाउँदाखेरि, ठीक, मैले सेकेन्ड लेक्चरमा भनेको थिएँ के मैले म हेराइदिएर छु। हेरा, सिम्पल ट्युबुलर के हुन्छ, क्रिप्ट्स अफ ल्युबरक्विन। मैले यो भनेको थिएँ सिम्पल ट्युबुलर के हुन्छ, क्रिप्ट्स अफ ल्युबरक्विन। वा हेरा यसमा यदि यसलाई थाहा छैन भने यसले लास्टको लेटर हेर्ने टी र एस छ है, ट्युबुलर सिम्पल, ट्युबुलर र सिम्पल यो लगाइदिने। ओके, क्रिप्ट्स अफ लास्ट को लेटर इज यस of crypts and second last letter t, t बनेको ट्यूबुलर। ओके, अब हेरा इसको अनि इसको के हुन्छ, इसको सिंपल ब्रांच एल्वियोलर को सिंपल ब्रांच देखो मैले भने थे सेबेसियस ग्लैंड हो कि नहीं, बी बी बटा ब्रांच एस बटा सिंपल, सिंपल सेबेसियस ग्लैंड। बुझिरहेको छौ कि नहीं? त यो भयो क्वेसन। अब यसपछि हामीले हाम्रो जुन थियो इपिथेलियल टिस्यू, यो इपिथेलियल टिस्यू हामी सकिसक्यौँ इपिथेलियल टिस्यू। ठीक छ, यसलाई एकचोटि रिवाइज गरिहाल्नु इपिथेलियल टिस्यू। यसबाट एक क्वेसन वन क्वेसन आइहाल्छ, बुझ्यौ। अब यस पछाडि हामीलाई इपिथेलियल टिस्यू कभर गऱ्यौँ। ठीक छ, कुन टिस्यू, इपिथेलियल टिस्यू यो हामीसँग कभर भइसक्यो। अब हामी आउँछौँ कनेक्टिभ टिस्यूमा। कुन टिस्यूमा, कनेक्टिभ टिस्यू। कुन टिस्यू, कनेक्टिभ टिस्यू। ठीक छ, कनेक्टिभ टिस्यू सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टिस्यू, कनेक्टिभ टिस्यू।
ओके कनेक्टिव्ह टिश्यू आम्ही सांगा कनेक्टिव्ह टिश्यूમાં तीनटा टाइप्स છે कनेक्टिव्ह टिश्यू को किती वटा टाइप्स છે कनेक्टिव्ह टिश्यू को तीनटा टाइप्स किती वटा तीनटा टाइप्स फर्स्ट टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू proper and second is fluid connective tissue fluid connective tissue second is fluid connective tissue and third is supporting connective tissue supporting connective tissue हेरा तीनटा छा आम्ही सांगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू ओके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिंग टिश्यू ठीक छा हेरा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को आम्ही सांगा किती वटा टाइप्स छा चार वटा किती वटा चार वटा फर्स्ट इज लूज लूज कनेक्टिव फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए हामीले एरियोलर टिश्यू पनि भनिन्छौं यसलाई के भनिन्छ एरियोलर टिश्यू के भनिन्छ यसलाई एरियोलर टिश्यू ठीक छ यसपछि हामीसँग अर्को छ एडिपोज कनेक्टिभ टिश्यू एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सेकंड इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यसलाई हामीलाई के भनिन्छौं फैट स्टोरेज इसलिए के भनिन्छ फैट स्टोरेज ठीक छ अनि थर्ड इज फाइब्रस एकैछिन है यसलाई रिवाइज गर्दै गरेर म 1 मिनेटमा लहेरा फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ठीक छ यो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यसलाई हामीले टफ्ट भन्छौं ओके टफ्ट यसमा दुईटा चीज हुन्छ एउटा हुन्छ लिगामेन्ट के हुन्छ एउटा के हुन्छ लिगामेन्ट अर्को के हुन्छ टेन्डोन्स ओके फर्स्ट इज लिगामेंट and second is tendons यो लिगामेंट भनेको के हो र टेन्डोन्स भनेको के हो ठीक छ यदि बोन टू बोन कनेक्टेड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं लिगामेंट ठीक छ यदि के कुन कनेक्सन छ यदि बोन टू बोन कनेक्सन छ भने त्यसलाई के भनिन्छ बोन टू बोन कनेक्सन छ भने त्यसलाई के भनिन्छ लिगामेंट यदि बोन टू मसल कनेक्टेड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं बोन टू मसल कनेक्टेड छ भने त्यसलाई के भनिन्छ टेन्डोन्स यदि यसमा कन्फ्युजन छ भने याद राख्नु @ बबुल हेरा बी बटा बोन फेरि बी बटा बोन एल बटा के हुन्छ लिगामेंट यो याद राख्नु
ટેન્ડોન્સको लागि यदि एउटा सम्झ्यो भने अर्को त्यस्तै आइहाल्छ बुझ्यौ। अब थर्ड इज हामीसँग के छ, थर्ड इज रेटिकुलेट कनेक्टिभ टिस्यू। कुन टिस्यू? रेटिकुलेट कनेक्टिभ टिस्यू। रेटिकुलेट कनेक्टिभ टिस्यू बुझ्यौ, यो भयो। अब यसपछि हामी अर्को टपिकमा अर्को पार्टमा आउँछौँ। सेकेन्ड पार्टमा सेकेन्ड टाइप्समा कुन टाइप्स छ? फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यू। हाम्रो बडीमा मात्रै दुई टाइप्सको फ्लुइड छ, एउटा ब्लड एन्ड एनदर इज लिम्फ। ठिक छ, यसमा दुईटा पार्ट्स आउँछ, ब्लड र लिम्फ। यसपछि सपोर्टिङ टिस्यू, सपोर्ट गर्ने काम हाम्रो बडीमा बोन र कार्टिलेजको हुन्छ। बोन एन्ड कार्टिलेज। ठिक छ, बोन एन्ड कार्टिलेज। फेरि बना, बोन एन्ड कार्टिलेज के हुन्छ? बोन एन्ड कार्टिलेज। फेरि बना, बोन एन्ड कार्टिलेज। अब यो जुन कार्टिलेज छ नि, यो कार्टिलेज यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। यसको के टाइप्स हुन्छ? डिफ्रेन्ट टाइप्स। जस्तै टाइप्समा कुरा गरे भने पहिला यसको के हुन्छ? फर्स्ट इज के इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, सेकेंड इज हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज एंड थर्ड इज फाइब्रस कार्टिलेज। बुझिरहेको छौ? तो यो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू को दुटा टाइप्स छ, बोन एंड कार्टिलेज। पहिला टाइप्स के हो हेरा, सॉरी हेरा, पहिला कनेक्टिव टिश्यू को तीनटा टाइप छ। कुन कुन? कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू र सपोर्टिंग टिश्यू। फेरि कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर को चारवटा टाइप छ, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू र रेटिकुलर टिश्यू। त्यसपछि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूमा दुईटा छ, ब्लड एन्ड लिम्फ। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूमा पनि दुईटा छ, बोन एन्ड कार्टिलेज। कार्टिलेजको तीनटा टाइप छ, इलास्टिक, हाइलिन र फाइब्रस। इलास्टिक, हाइलिन र फाइब्रस। अब एउटा एउटा गरेर हामी सबै पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीसँग के छ? कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर। कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर के छ? कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर के छ? कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर। ओके, यो कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपरमा हामीसँग कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपरमा पनि हामीसँग के हुन्छ? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यू छ फर्स्टमा। द फर्स्ट पॉइंट इज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यू के छ? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यू। कुन टिस्यू? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यू। ठीक, कुन टिस्यू? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यू। ठीक छ, यसलाई हामीले अर्को नामबाट के भन्छौँ? कसैलाई थाहा छ अर्को नामबाट यसलाई के भनिन्छ? अर्को नामलाई लूज कनेक्टिभ टिस्यू। लूज कनेक्टिभ टिस्यू। ठीक, कुन टिस्यू? लूज कनेक्टिभ टिस्यू। फेरि बना, कुन टिस्यू? लूज कनेक्टिभ टिस्यू। फेरि बना, कुन टिस्यू? लूज कनेक्टिभ टिस्यू। ठीक, अब यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर, जस्तै हामीसँग यो एउटा टिस्यू छ। हेर, यसमा सबभन्दा पहिला हामीसँग टिस्यूभित्र के हुन्छ? फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल, मैक्रोफेज। ठीक, त्यस्तै गरेर हामी यसलाई बनाउँछौँ। पहिला बुझिहाल्छौ के छैन यसमा। हेर, यो हेरिरहेछौ नि, यसलाई हामीले के भन्छौँ? यो यसलाई बिचको पार्टलाई यसलाई हामीले के भन्छौँ? फाइब्रोब्लास्ट। कुन ब्लास्ट? स्पेलिङ रङ भइहाल्छ एकैछिन है। फाइब्रोब्लास्ट।
फिब्रोब्लास्ट. ओके. आणि यो जो स्ट्रक्चर एरिया छो यो निस्के कोई स्ट्रक्चर इसलिए हमें लेके बनी जा कोलेजन फाइबर. कोलेजन फाइबर. कौन फाइबर? कोलेजन फाइबर. यो कौन कलर कौन सा? यो कोलेजन फाइबर. एक ऐसी नहीं फेरी शुरू देखी बनाई दी रहा छू कि मेरे लिए बुझते बुझते नो फिर ठूलो बनाम क्या नो भैया. हेरा हेरा सब बंदा पहला हमें कौन सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल बनावने. ओके. तर हमी संगा यो छा फाइब्रोब्लास्ट सेल. ठीक. इस पची इस यो संगा अटैच हुंचा कौन फाइबर? कौन फाइबर? कोलेजन फाइबर. ठीक. अब इसको बारे में हमें पहला लिखी आलम. हेरा यो कौन सेल हो? फिब्रोब्लास्ट. यो कौन सेल हो? फिब्रोब्लास्ट. आणि यो के हो? कोलेजन फाइबर. कोलेजन फाइबर. यो कौन कलर कौन सा? व्हाइट कलर. कौन कलर कौन सा? यो व्हाइट कलर. ठीक. इस पची हमी संगा दूटा हमी संगा सेल हुंचा यो भितरा सेल दूटा हुंदा ना इसको नाम हो मास्ट सेल. कौन सेल? मास्ट सेल. कौन सेल? मास्ट सेल. आणि अर्को स्ट्रक्चर पाइन से यानी रा मैक्रोफेज बने को. कौन फेज? माइक्रोफेज. कौन फेज? माइक्रोफेज. ठीक. आणि अर्को स्ट्रक्चर यहाँ पाइंचा सॅनो 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 स्ट्रक्चर दिसले हमी लेके बनचम प्लाज्मा सेल. ठीक है. हेरा इसमें के पाइंचा फर्स्ट इज फाइब्रोब्लास्ट and second is collagen fiber and third is mast cell and fourth is macrophage. fourth is macrophage. अब मला बना कोलेजन फाइबर कौन कलर कौन सा? कोलेजन फाइबर कौन कलर कौन सा? व्हाइट कलर. कौन कलर? व्हाइट कलर. कौन कलर? व्हाइट कलर. कोलेजन फाइबर कौन कलर कौन सा? व्हाइट कलर. कोलेजन फाइबर कौन कलर कौन सा? व्हाइट कलर. ओके. कोलेजन फाइबर कौन कलर कौन सा? व्हाइट कलर. आणि यो जो मैक्रोफेज છે ને यो के हो? यो ફેગોસાઇટોસિસ. એ છે ફેગોસાઇટોસિસ કરે. इस પછી यो जो मास्ट सेल છે ને ये कसको मॉडिफिकेशन हो? तो मास्ट सेल कसको मॉडिफिकेशन हो? मॉडिफिकेशन ऑफ बेसोफिल सेल. कौन सेल? बेसोफिल. फिल. ठीक है. के अच्छा इसमें हिपेरिन heparin and next is histamine. heparin and histamine. के छा? heparin, histamine. ओके. मास्ट सेल मा मास्ट सेल के हो मॉडिफिकेशन ऑफ बेसोफिल सेल आणि मास्ट सेल बटा के सिक्रेट हुन्छ हिपॅरिन हिस्टामिन आणि नेक्स्ट इज एउटा अर्को सिक्रेट हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं सेरोटोनिन. के हुन्छ? सेरोटोनिन. ठीक. मास्ट सेल बटा जो सिक्रेट हुन्छ. ओके. अब इस पची हमी संगा हेरा यहाँ यो कौन सेल हो? यो प्लाज्मा सेल हो. कौन सेल हो? प्लाज्मा सेल. कौन सेल हो? प्लाज्मा सेल. ओके. कौन सेल हो? प्लाज्मा सेल. यो प्लाज्मा सेल लाई हामीले अर्को नाम बटा के भनिन्छौं कार्टविल सेल. सॉरी विल WH
ELL whale shell, कार्ट whale shell. ठीक છે કુન સેલ कार्ट whale shell, કુન સેલ कार्ट whale shell. यो भयो अब हेरा हमें संगा मास्ट सेल में के मॉडिफिकेशन ऑफ बेसोफिल सेल सीक्रेट के छ हिपेरिन हिस्टामिन र सेरोटोनिन आणि फाइब्रोब्लास्ट छ टाइप्स में अर्को कोलेजन फाइबर जो व्हाइट कलर को हुन्छ अनि मैले के सिखाउन गइरा छु भने जस्तै हामीसँग मास्ट सेल छ है कुन सेल छ मास्ट सेल ठीक छ यसले सिक्रेट के गर्छ के गर्छ फर्स्ट इज हिस्टामिन and second is heparin and third is serotonin. ठीक है थर्ड इज सेरोटोनिन थर्ड इज सेरोटोनिन फर्स्ट इज हिस्टामिन सेकंड इज हेपेरिन थर्ड इज सेरोटोनिन ठीक अब यो जुन हेपेरिन छ नि यो हिपेरिनलाई हामीले के भनिन्छौं नेचुरल एन्टिकोगुलेन्ट के भनिन्छ नेचुरल एन्टिकोगुलेन्ट के हुन्छ यो नेचुरल एन्टिकोगुलेन्ट ओके अनि जो हिस्टामिन छ नि र सेरोटोनिन छ यसमा केमा हेल्प गर्छ यो हिस्टामिन वेसोडाइलेटर को काम गर्छ ठीक छ वेसोडाइलेसन को काम गर्छ ठीक छ वेसोडाइलेटर जसमा के हुन्छ ब्लड प्रेशर हाम्रो बडीमा के हुन्छ डिक्रीज हुन्छ ब्लड प्रेशर वेसोडाइलेटर भनेको ब्लड प्रेशर डिक्रीज अनि सेरोटोनिन कसको काम गर्छ वेसो कन्स्ट्रिक्टर यसमा के हुन्छ ब्लड प्रेशर के हुन्छ इंक्रीज ब्लड प्रेशर ठीक छ ब्लड प्रेशर के हुन्छ इंक्रीज अब नेक्स्ट मा हामीसँग अर्को कुन सेल थियो एउटा फाइब्रोब्लास्ट ठीक छ के थियो हामीसँग फाइब्रोब्लास्ट के थियो अर्को फाइब्रोब्लास्ट मा तीन टाइप्स को फाइबर हुन्छ ठीक जस्तै यहाँ फाइब्रोब्लास्ट सँग कुन फाइबर अट्याच थियो कोलेजन फाइबर यस्तै गरेर फाइब्रोब्लास्ट सँग तीनवटा फाइबर हुन्छ फर्स्ट इज कोलेजन फाइबर and second is elastin fiber first one is collagen fiber and second is elastin fiber and third is reticulin fiber and third is reticulin fiber very bana first is collagen fiber second is elastin fiber and third is reticulin fiber ठीक छ अब यो जुन कोलेजन फाइबर छ नि कोलेजन फाइबर यो कुन कलर को हुन्छ यो कुन कलर को हुन्छ यो व्हाइट कलर को हुन्छ कुन कलर को हुन्छ व्हाइट कलर को यो कहाँ पाइन्छ एरियोलर मा एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यू मा अहिले हामीले पढ्यौं नि एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यू मा कोलेजन फाइबर कुन कलर को हुन्छ व्हाइट कलर को ठीक छ यसपछि अर्को छ हामीसँग इलास्टिन फाइबर यो कुन कलर को हुन्छ यो येलो कलर को हुन्छ कुन कलर को हुन्छ येलो कलर को यो कहाँ पाइन्छ एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यू मा पाइन्छ कुन टिस्यू मा एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यू मा यसपछि अर्को हामीसँग के छ रेटिकुलेट कनेक्टिभ टिस्यू ठीक छ यो कहाँ पाइन्छ रेटिकुलिन फाइबर रेटिकुलेट कनेक्टिभ टिस्यू मा पाइन्छ ठीक छ रेटिकुलेट हेरा मैले के भन्न गइरा छु जस्तै मैले कोलेजन फाइबर भने नि यो कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट सँग के छ बाउन्डेड छ नि त यो के हुन्छ बाउन्डेड अनि इलास्टिन फाइबर के हुन्छ ब्रान्च अनि रेटिकुलेट फाइबर के हुन्छ स्क्याटर्ड ठीक छ स्क्याटर्ड भएर बसेको हुन्छ हेरा कोलेजन फाइबर बाउन्डेड भएर बसेको हुन्छ इलास्टिन फाइबर ब्रान्च भएर बसेको हुन्छ र रेटिकुलेट के हुन्छ
रेटिकुलेट रेटिकुलेट बना के उंचा स्कैटर्ड ओके केवंचा स्कैटर्ड केवंचा स्कैटर्ड अब इस पछी हेरा यो फाइब्रो मास्ट सेल भाई आलो हिस्टामिन सिक्रेट करने वेसोडायलेटर को काम कर ब्लड प्रेशर ला डायल्यूट कर यदि हेरा कंस्ट्रिक्ट भाई बने हार्ट इसको ब्लड प्रेशर केवं छा बढ़ छा त कंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़नो तो के लिए कर छा सेरोटोनिन ले यदि डायल्यूट भाई बने ब्लड प्रेशर केवं छा घट छा तो घटने काम के कर छा हिस्टामिन ले हिपैरिन छा को नेक्स्ट नेक्स्ट हिपैरिन बने को नेचुरल एंटीकोगुलेंट हो कौन हो नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन कोगुलेंट नेचुरल नेचुरल एंटीकोगुलेंट ठीक छा नेचुरल एंटीकोगुलेंट ओके अब हेरा मैले भने यो दुटा अनि अर्को हामीसँग अर्को कुन सेल छ यो मास्ट सेल भएर फाइब्रोब्लास्ट अर्को हामीसँग के छ प्लाज्मा सेल यसलाई हामीले अर्को नामले के भनिन्छौँ कार्ट व्हील शेल यो केले बनेको हुन्छ मेड बाई बी लिम्फोसाइट है लिम्फोसाइट केले बनेको हुन्छ बी लिम्फोसाइटले यसलाई अर्को नामले के भनिन्छौँ कार्ट व्हील शेल ओके कार्ट व्हील शेल यो भयो कंप्लीट एडिपोज टिश्यू सॉरी एरियोलर टिश्यू को कंप्लीट कंसेप्ट ठीक अब हेरा तिमीहरूलाई के हुन्छ याद हुँदैन त त्यसको लागि के गर्ने एउटा ट्रिक रिमेम्बर गर्ने मात्रै पुरै एरियोलर कनेक्टिभ टिश्यू यसमा कभर भइहाल्छ मिस्टर परफॉर्मर के याद गर्ने पर फॉर्मर मिस्टर परफॉर्मर यो याद करने ठीक है क्या याद करने मिस्टर परफॉर्मर तेरा मिस्टर को एम बटा मास्ट सेल ओके आणि नेक्स्ट आर बटा रेटिकुलिन फाइबर आणि आर को प्लाज्मा सेल पी बटा आर बटा रेटिकुल पी बटा प्लाज्मा सेल आणि आर को एफ बटा फिब्रोब्लास्ट सेल फिब्रोब्लास्ट सॉरी सेल होइना आणि एम बटा मैक्रोफेज जी एम आर परफॉर्मर फेब्रोब्लास्ट आणि अर्को के हो मैक्रोफेज यो मास्ट सेल को फर्दर डिवाइडेड इन्टु 3 टाइप्स ठीक है यस्तै गरेर शॉर्ट नोट्स बनाउने के यस्तै गरेर मास्ट सेल इज डिवाइडेड इन्टु 3 टाइप्स फर्स्ट इज हिपैरिन second is histamine and third is serotonin. First is heparin, second is histamine and third is serotonin. Heparin natural anticoagulant histamine vasodilator it means बीपी लाई के गर्छ कम गर्छ यसलाई एलर्जीमा काम आउँछ भिटामिन दिने अर्को सेरोटोनिन वेसो कन्स्ट्रिक्टर यसले बीपी लाई के गर्छ बढाइदिन्छ इंक्रीज बीपी ठीक छ अर्को हामीसँग प्लाज्मा सेल यसले मेड बाई बी लिम्फोसाइट यसलाई अर्को नामले कार्टवेल सेल भनिन्छ कुन सेल कार्टवेल सेल अनि फेब्रोब्लास्ट कुन हुन्छ कोलेजन फाइबर यो कुन कलर को हुन्छ
व्हाइट कलर कोणचा यो यसमा केवंचा एबंडेंट हुंचा केवंचा एबंडेंट हुंचा आणि अर्को के कोण सेलचा मैक्रोफेज सेल यो केवंचा फेगोसाइटोसिस कोण सेल हुंचा फेगोसाइटोसिस ठीक है तो ये कंप्लीट के हो दिस इज द कंप्लीट concept of in one slide in one small paper માં પણ યો અટાઈ હાલ છે તમે એલિયોલાર કો બારેમાં મજા લે બુજીન છો इसમાં ઓકે बुझो यो भयो एरियोलर एकैछिनमा टाइम हेर्छु कति भयो अनि यदि टाइम फेरि मलाई काम पनि छ 45 मिनट्स भइहाल्यो ल ठिकै छ फेगोसाइटोसिस ठीक छ हेरा फर्स्ट इज कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु यस अब हेरा तिमी अब यो सबै के बुझ्नु पर्दैन यहाँ सुरुबाट तिमीलाई यदि बुझ्नु छ भने रिभर्स गरिदिने त्यसलाई के गर्ने ने हल्का ब्याक गरेर फेरि हेर्ने के भिडियो हेर्ने तर एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के याद गर्नुपर्छ मात्रै यो याद गर्नुपर्छ मिस्टर परफर्मर एमआरबाट मास्ट एमबाट मास्ट सेल हेपारिन हिस्टामिन सेरोटोनिनले नेचुरल कोअगुलेन्ट यस्तो यस्तो र रेटिकुलिन फाइबर प्रेजेन्ट हुन्छ मास्ट प्लाज्मा सेल मेड बाई बी लिम्फोसाइट सेल यसले कार्टविल सेल पनि बनिन्छ फिब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर व्हाइट कलरको हुन्छ अनि एबन्डेन्ट हुन्छ मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस हुन्छ यसपछि अर्को लेक्चरमा हामी कन्टिन्यू गर्छौं के को बारेमा नेक्स्ट लेक्चरमा हामी कन्टिन्यू गर्छौं के को बारेमा एडिपोज एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु ओके यसलाई पनि एकदम मजाले बुझिन्छौं हामी केही त्यसमा गाह्रो मान्नु पर्दैन अनि यो सक्ने कुरा गर्छौ भने यो हाम्रो थर्ड लेक्चर हो 7th लेक्चरसम्म हामी एनिमल टिस्युलाई कम्प्लिट गर्छौं 6th या 6th लेक्चरसम्म म्याक्सिमम हामी कम्प्लिट गर्छौं यसमा हामीले नर्भस टिस्यु पढ्दैनौं किनभने नर्भस टिस्यु हामी नर्भस सिस्टममा पढ्छौं यसपछि हामी नर्भस सिस्टम स्टार्ट गर्छौं है र ठीक छ अब आजको लागि यति नै तिमीहरू रिभिजन गर्दै गर नेक्स्ट लेक्चरमा हामी फेरि भेटौँला थ्यांक यू फर द listening keep revise thank you